सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा गर्मियों को लेके कि गर्मी के अंदर जब हम अपने हेयर पैच को फिक्स करते हैं तो उसके अंदर स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं इचिंग ना हो जाए, ये भी कुछ लोग सोचते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ उन सभी लोगों के लिए कि क्लिपिंग हेयर पैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने सर बैठे हुए हैं और इनका पूरी हेड की जो भी कंडीशन है आप पूरी देख सकते हैं कि हर जगह से इनके पूरे बाल 101% है। मगर आगे से जो इनकी फ्रंट हेयरलाइन है वो इनकी फ्रंट हेयरलाइन बिल्कुल जा चुकी है, तकरीबन 30% एरिया इनका जा चुका है, जिससे हमारा एक लुक आता है वो पूरी चीज़ इनकी ख़त्म हो गई है। तो आज हम उनको इसी पूरे फ्रंट के ऊपर और आज इनको पूरा पैच लगाने वाले हैं, क्लिपिंग हेयर पैच लगाने वाले हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि सर गर्मी है तो मेरे को क्लिपिंग हेयर पैच ही चाहिए, और क्या मैं क्लिपिंग हेयर पैच के अंदर कुछ भी स्टाइल बना सकता हूँ, कोई भी स्टाइल ले सकता हूँ या नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. More times than I can get out.